next phylum, that is the Porifera. As its name indicate, phylum Porifera, its name is due to, जिस तरह साढ़े नाम है ना, इस तरह ही इहदा भी नाम है, pores are present. Porifera means the animal who have pore on its body, that is, it is called Porifera. Clear? The animal which is present, earlier we have done the unicellular animal. In previous phylum we have done the, this is the actual which come under the kingdom Animalia. ठीक है, इस तो पहला we have studied the unicellular animals with the eukaryote. What is the meaning of unicellular? Single cell. What is the meaning of eukaryote? This is a type of cell who have the organized nucleus along with all organelles like mitochondria, Golgi body, ribosomes, all these are present. Another one is called prokaryote, which don't have any such organelles except ribosomes, and the nucleus is also not organized nucleus, it is just there is present genetic material in the form of DNA. But when there is present the total this structure, this is called the nucleus, when nuclear membrane is there. Secondly, the animals come under is multicellular, which is made up of many cells. The animals come under the Porifera. So Porifera is a gateway to enter from unicellular animals to multicellular animal. In case of kingdom Animalia, not kingdom Plantae च भी multicellular होंदे, we are related with the animals. So this is the start of the multicellular animals. No doubt eukaryote cell is also there. All the cells, they are eukaryotic. Here the cell is unicellular. So इको सेल नहीं सारे फंक्शन परफॉर्म करने, रोटी भी उन्हें ही खानी, रेस्पिरेशन भी उन्हें ही करनी, अनडाइजेस्टेड फूड भी उन्हें ही बाहर कढ़ना, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर भी उन्हें कढ़ना in case of unicellular. But in case of this Porifera multicellular organism is a multicellular, but its role, all the function that is played by this animal by each cell, means each cell of its structure, yeah, each cell of this organisms which are present in the Porifera, they do their all functions individually. अपना अपना फंक्शन सारे आप कर दे है, जिस तरह तुहाडी क्लास से तुसी अपनी अपनी पढ़ाई आप ही करनी सब ने, मतलब नो डाउट देयर आर मैनी सेल्स बट ईच सेल दैट डू इट्स ओन फंक्शंस, ऑल ओन फंक्शंस, लाइक रेस्पिरेशन हर एक सेल ने अपनी अपनी करनी, हर एक सेल ने खाना खाना अपना अपना, डाइजेशन, they do not do that collectively like in our body, that is called the tissues. Here is the level of organization is cellular level of organization. This term is clear. No doubt it is a multicellular, but still each cell its own, all the own functions. It is not depend upon, जिस तरह साढ़े अंदर खान ਲਈ एक पूरा वखरा सिस्टम बनेगा, केड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम,
रेस्पिरेशन वास्ते रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन वास्ते किडनी वाला सिस्टम, बट here the each cell do its own complete functions. ठीक है, this is clear to everyone. These are the 2-3 main important things which is related with the poriferous. Clear है? There is one animal type study, like in previous phylum we have done the in protozoans, we have done the amoeba complete study, paramecium complete study, then is the plasmodium vivax complete study. So it also has a complete study to verify the all characters and more than other characters. One important character that is related, that is also found in case of the these poriferas, that is the canal system. Canal system is a different structure, a different system which is present in case of poriferas. Now what is this canal system? When we see the पानी जेड़ा वै पहाड़ों चो आया एंड दैन एंटर इनटू द डिफरेंट पाथ्स, कित्थे आ गया? मैदान दे विच आ गया, मैदान तो है कित्थे जाएगा? समुंदर दे विच जाके मिलेगा थ्रू वेरियस पार्ट्स. दिस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कम आउट ऑफ द बॉडी, एंटर फ्रॉम द वन सिस्टम, one part, and move from various places to come out of the body, that is called the canal systems. These are the first one is incurrent canal. In case of incurrent canal means, as name indicate, water enter into the body. Incurrent अंदर आना. Then is radial canal. ये ताड़े सिलेबस च पूरा हैगा वा, मतलब पूरा सिस्टम हैगा वा, कल करवावांगे नेक्स्ट लेक्चर च. Then is the radial canal. जिस तरह मान लो पहाड़ों चो चल के जिथों ओरिजिन किया, पहाड़ों चो चल के नीचे आ गया मैदान च, that is called its radial canal. Then excurrent canal. Second is this, third is excurrent canal. जिथों की होएगा, from the canal system they come into the a one common cavity that is called the spongiocele. They are also called sponges. Why these are called sponges? Anybody can tell why they are called sponges? Spongy रसगुल्ले खाते हैं ना, उन्हें विच की हुंदा है? पोर्स होंदे कि नहीं, जगह जगह स्पेस होंदे है. ते इसे तरह ही अगर if there is a pores, then it is called sponges. Or that pores, they are always filled with water because they live in water. ठीक है. First is habitat of cycon. समझ आ रहा है बेटा सबनों? First is the cycon. The animal which come under your syllabi is cycon, or second name it's Scypha. They are the sedentary animals habitat. They live in water. They live in shallow water. Shallow water, and they are sedentary. What is the meaning of this? Fixed animals. मैं
ਅੱਗੇ ਵੀ कहदा कि ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ डिफरेंट टर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ टर्मिनोलॉजी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक पेज ਤੇ लिखी जाना घर जाके ताकि बाद चो पता लगे फिक्स्ड they are fixed that is called the substratum मान लो किसी पत्थर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ so these are the fixed animal secondly you can see 1 2 3 they are commonly common base where they are attached they are called colony animals they live in colony पता ना एक particular area where there lives many peoples in their homes but or that is कॉमन अही एक कलोनी च देखने पूरी कलोनी दे विच लोग तो रहिंदे मकानां दे विच बाहर एक गेट लगा हुंदा वो पूरा दा पूरा एक की बन जाता है पूरा एक पैकेज या गेट जा सेम वे इट हैज़ ए दे लिव इन कलोनी मतलब कल्ला कल्ला नहीं रहिंदा दे लिव इन पर्टिकुलर कलोनी टू करैक्टर्स सेडेंटरी एंड they live in colony or they are present in the shallow water these all terms clear jitho water currents aande hai they bend toward the that side is tarah karke na if water current pani de vich aandi hai na waves when the water current is this side they move that toward the that side then if they are now next is habits what are the habits they live in colony that is its habit इकट्ठे अलग अलग नहीं रहंदे they live in a colony second as they live in water they take food from the water they take the small organisms they are the carnivorous ones they take the small organisms third one is respiration is with help of water पानी च रहनगे तो हवा चो थोड़ी लैनगे पानी चो ही लैनगे ना next is there is present in the center जिस तरह मान लो यह साइकोन हो गया ये अंदर जिहड़ी है जगह वै खाली दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जियोसील क्लियर स्पॉन्जियोसील नेक्स्ट इज reproduction excretion is ammonia nitrogenous waste matter excreted through general body surface the where they throw nitrogenous waste matter the water enter into the body and goes out of the body and food the water enter into the body that contain oxygen from where they take the oxygen and जदों पानी आया उहदे च फूड भी तो होएगा ना दैट इज़ आल्सो टेकन थ्रू दैट वाटर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन both type of reproduction asexual as well as sexual reproduction asexual means without the involvement of the sex organs or gametes here the asexual reproduction that is takes place by budding by bud इतों साइड तो बड निकली वो वड्डी हुंदी गई it forms the न्यू वन फिर हो सकता है तो उतर जाए किते होर जाके फिक्स हो जाए और देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी देन इज नेक्स्ट इज
sexual reproduction is also there. The cells form two type of cells, male and female gametes. Male and female gametes. Female gametes are the egg and male gametes they are the sperms. Fertilization is cross fertilization. मतलब एक कॉलोनी चों स्पर्म्स बनते हैं, दे मूव टू अनदर कॉलोनी. ठीक है. दे वाई दिस? बिकॉज देयर इज ए कंडीशन, प्रोटेंडरी कंडीशन. मतलब जड़े स्पर्म्स है दे मैच्योर अर्लीयर दैन द एग वन. ठीक है. थर्ड, स्टिल दे हैव मेल एंड फीमेल बट स्टिल देयर इज ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन. जबकि उहदे कोल मेल तो फीमेल दोनों ऑर्गनस हो गया है, बट फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. उहदा कारण की है? प्रोटेंडरी कंडीशन. स्पर्म्स मैच्योर अर्लीयर. लिख लो है कंडीशन. जदों फीमेल जल्दी मैच्योर होंदी है उन्होंने कहने प्रोटोगाइनी, और दिस इज स्पर्म्स मैच्योर अर्लीयर. मैच्योर स्पर्म्स मैच्योर का मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ. मैं दस्या ना पिछली बारी भी. नेक्स्ट, there is metamorphism. There form a one larva, very important larva, that is called amphiblastula. Amphiblastula larva. This is a ciliated larva, मतलब body that contain the cilias. When they fix and change into a adult, its structure is different when they fix and form a cycon. This is called the metamorphosis. There is, what is metamorphosis? Change of larva into adult. वो तो हर एक जी हुंदा आपां कहांगे, but with different habitats and conditions. They change into another conditions. That is called the metamorphosis. This is clear. This is habitat. Now, external character. The external character of the cycon, they are made up of, they are grey in color. Its body is like this. They are made up of, they are vase like. वाज की हुंदा? गुलदस्ता. घर च गुलदस्ता देखिया ना, उपरों छोटा जिथों असीं वो फुल वगैरह पाने आ. Here in the middle it is a broadest portion, then again it become narrow one. ठीक है. This is vase like. vase की हो गया गुलदस्ता. Next, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ. ਦਿਸ ਪੋਰ broad portion that is called the osculum. Osculum. It's a membrane. They are made up of number of such hexagonal cells. Hexagonal cells. इन्हां दे
between these cells there is present pores. Now see, this is the cell, hexagonal cell. Between them there are present pores. Due to this pores they are called the porifera. Due to this मतलब ਜਦੋਂ दो सैल आपस से जुड़ते हैं उन्होंने विच की आ जाता वै छोटे छोटे पोर्स, दैट इज़ कॉल्ड, इस करके दा नाम है पोरीफेरा, और दे आर कॉल्ड दीज पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड ओस्टिया। एक नूं की कहने आ ओस्टियम, एक नूं की कहने आ ओस्टियम, एंड वैन एक थोड़ी होएगा इच किन्ने सारे है, सो इट इज़ कॉल्ड ओस्टिया। क्लियर है सारा? क्लियर? इत्थों पानी जड़ा वै वो अंदर एंटर करता है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ water enter into the inner side and comes out of through the osculum. In the osteas there are present number of finger like hard structures which are called, जिस तरह कंडे कंडे जे होंदे है इस तरह करके, there are present number of hard structures around these osteas और इन्हां दे उपर भी वॉल दे उपर, these are called the spicules. Spicules. These spicules they are made up of calcium. ताई इहदा नाम मैं बोलिया सी कलकेरिया, बोलिया सी ना क्लास, calcaria. Why it is called calcaria? Because its spicules they are made up of calcium. Clear? Then is this is the structure like this, or there are also present number of spicules here also in the body, क्योंकि जिथे जिथे भी पोर होंगे there are present इन्हां सारियां जगह तो स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और इट लुक लाइक ए फर, जिस तरह फर होंदी है ना उस तरह दे। हेयर इज अराउंड द स्पिक्यूल ऑस्कुलम देयर आर आल्सो प्रेजेंट मायोसाइट सेल्स, मायोसाइट विच क्लोज एंड ओपन द ऑस्कुलम। नहीं तो की होएगा, ऑस्कुलम तो वड्डा वै, ऑस्कुलम तो पानी अंदर आंदा जाएगा, ठीक है। ऑस्कुलम इज ओनली फॉर द गोइंग आउट ऑफ द वाटर। क्लियर है? कित्थों पानी एंटर करता है? ऑस्टिया चो। वाटर कित्थों एंटर करता है? ऑस्टिया चो। बाहर कित्थे निकलता है? ऑस्कुलम चो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उहदे विच स्पिक्यूल्स है कित्थे? ऑस्कुलम दे आले दुआले, जिहड़े इस तरह करके उन्होंने बंद रखते हैं, तो पानी प्लस फूड प्रोडक्ट उहदे विच अंदर नहीं आ सकते। और मायोटोम मायोसाइट सेल्स दे आल्सो क्लोज द osculum. When water is inside then they open, ते पानी बाहर चला जाता है, फाउल वाटर। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द। नाउ we will do the next part, that is the canal system. Canal system, which is a important part of the sponges. हाँ, these colony they are fixed to some rock
and that is substratum, and from here let it be this is a colony and there are present number of pores, that is called the dermal ostia. ठीक है, ostia or dermal ostia, that is the one same thing. Dermal ostia is not different from ostia which I have told you. The spicules that I have told you. Then is the oscular fringe. What is this oscular fringe? Osculum you got. Osculum fringe is, मैं जड़ी हुने दसी है कि there are present number of spicules around the osculum plus myocytes. They close the osculum. That is called the oscular fringe. Now canal system. Its membrane is like this. If we study, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ, there are present it is this membrane is its membrane is porous one. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? pores. It is not a regular membrane, it is like this. Same here. What is these called? What are these structures? हाँ बोलो, शाबाश. What are these structures? Dermal ostia. सारी मैमब्रेन दे उपर डर सब नूं पता वा, बट ये डर लगता पाया कि गलत ना हो जाए. की हो जाएगा जो गलत हो भी जाऊगा? मतलब ये इस तरह है ना, देखो पेन इस तरह है ना, तो सानू तुहानू किस तरह दिखना, एक साइड ही दिखती पई है ना, तो इस करके आप बनाया इस तरह है. अदरवाइज तो यदि मैमब्रेन पूरी इस तरह ही है ना, जिहड़ी साइड तुहानू एक साइड ही दिखेगी, सानू एक साइड ही दिखती पई है. और तुसी कित्थे देखोगे इत्थे सारे पोर्स है, क्योंकि इत्थे तो असीं बना नहीं सकते, किद्दां बनावांगे, वो तो उस तरह ही दिखणगे ना जिद्दां बने दे. क्लीयर है? ये आ गए डर्मल ऑस्टिया. किन्ने सारे डर्मल ऑस्टिया. दिस डर्मल ऑस्टिया, then there is a internal membrane. But interesting thing is that its internal membrane, that is not like this, that is like this. जे असीं इहनूं देखीए तो किस तरह दिखणगे सानूं, this is like this. Detailed diagram
we will draw it is like this. ठीक है, सेम on the outside. Detail, we will form the diagram where there is a close here, there is a pore on the outside, and then it is like this, then again pore, then it is again, there is a again pore, it is like this, there is again pore. एक चीज़ ध्यान नाल समझो, एक ही आ गया डर्मल ऑस्टिया. व्हाट इज दिस? डर्मल ऑस्टिया. ठीक है, दिस इज इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल. हुन इनकरेंट कैनाल तो there is also movement of the water to next canal which is closed on this side. This is open here and closed inside, है ना. ए देखो, जिहड़ी बाहरों खुली है अंदरों की है बंद है. क्लियर? वो किहड़ी हो गई? ए ऑस्टिया. एक है ना ऑस्टियम लिखने, इनू की लिखांगे इनकरेंट कैनाल. इथों देयर इज आल्सो प्रेजेंट पोर्स, जिथों पानी इधरों एंटर करेगा, इहदे च आ गया इथों वाटर दैट एंटर इनटू द अनदर कैनाल. दैट कैनाल इज क्लोज्ड हेयर एंड ओपन हेयर. इट इज जिहड़ी इधरों खुली दी है वो अंदरों बंद है, जिहड़ी बाहरों बंद है वो अंदरों खुली. क्लियर? नैक्सट इज इनू की लिखांगे रेडियल कैनाल. हुणे लिखाइयां सी ना 3 कैनाल. रेडियल कैनाल. रेडियल कैनाल तो then they enter into next canal. पानी इधरों भी अंदर जाएगा, इधर नू पानी इधरों भी इधर नू जाएगा. दिस इज कॉल्ड द एक्स करंट कैनाल. और दिस सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड स्पॉन्जियो सील. स्पॉन्जियो सील. और here is present osculum. osculum जिथों पानी बाहर आ जाएगा. इथों एंटर किया इनकरेंट कैनाल. इनकरेंट कैनाल इज closed on the inner side. From these pores, these are called the prosopiles. की कहने हैं इन्हों? प्रोसोपाइल. Then they enter into the radial canal. After this radial canal, they open into excurrent canal by the apopyle. Apopyle. Or they open into spongiocele. After spongiocele, through the osculum come out of the body. Last one structure, I will draw the canal system. Write, not draw,
yesterday we will tomorrow we will do the complete system. First ostium, water movement, then is the incurrent canal, then into the prosopile. Through prosopile they enter into the radial canal. After the radial canal, apopyle, avila, apopyle, and then excurrent canal, and then into the spongio seal, then through osculum outside. From the outside that water enter into the ostium. बाहर चला गया ना जिथे रहिंदा उत्थों फिर ओस्टिया दे थ्रू अंदर. This is the total canals. Tomorrow we will do the detailed structure of that. Thank you.